Class 10. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Textbook, First Flight, lesson number 4 from the diary of Anne Frank, page number 51, first paragraph. Since no one would understand a word of my story in Kitty, if I were to plunge right in, means go straight to the topic. Go straight to the topic. Go straight, STRAIGHT, to the topic, TOPIC. I'd better provide mean it would be better for me to provide. I'd provide means it would be better for me to provide. A brief sketch. Sketch means picture of my life. Much as means although. Ramu, much as I dislike doing so. Ramu, पानी पिलाओ पानी. My father, the most adorable father, सबसे अधिक पूजनीय पापा. सबसे अधिक पूजनीय पापा को पाया है. I didn't marry I've ever seen. My father subject है, verb यहाँ है didn't marry. My father, कौन father? The most adorable father I have ever seen. सबसे अधिक पूजनीय पाया है. अब तक जितने फादर्स को हमने देखा है सबसे अधिक पूजनीय. तो my father didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland
हॉलैंड जाकर बस गए। इसकी मीनिंग लिखना चाहते हैं, एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, हॉलैंड जाकर बस गए। My mother, Edith Holland Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Anton to stay with our grandmother. Grandmother, दादी माँ के साथ। I was sent to AACHEN, आचन, इसका प्रोनाउंसिएशन आचन। दादी माँ के साथ रहने को आचन चली गई। In September, while Morgan and I were sent to Athens to stay with our grandmother, Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down. On the table as a birthday present for Margaret. जबकि मुझको जो है मार्गरेट के लिए जन्मदिन के उपहार के स्वरूप में मेज के ऊपर रख दिया गया, मेज के ऊपर बैठा दिया गया। Lying down on the table as a birthday present for Margaret. I started right away, immediately. तुरंत क्या स्टार्ट कर दिया? I started right away at the Montessori Nursery School. पढ़ाई के लिए वहाँ जाना शुरू किया। आई स्टेड नियर देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, पहली कक्षा, फर्स्ट फॉर्म, इन द 6th फॉर्म, छठी कक्षा में। माई टीचर वाज मिसेज क्यूपरस, मिसेज क्यूपरस द हेडमिस्ट्रेस। My teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress, प्रधान अध्यापिका. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. क्योंकि हम दोनों को हृदय को तोड़ने वाली heartbreaking farewell, हृदय को तोड़ने वाली अलविदा। तो हम दोनों के आंखों में आंसू थे जब, क्योंकि हम लोगों ने कहा, जब हम लोगों ने कहा हृदय को तोड़ने वाली अलविदा। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday paused with little celebration. With little celebration means with no celebration. Negative meaning देता है, little means no. बिना उत्सव के गुजरा. Paused with little celebration meaning
बिना उत्सव के गुजरा। मेरे जन्मदिन पर कोई उत्सव नहीं हुआ। क्योंकि ग्रैंडमा का ऑपरेशन हुआ था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. उन्नीस सौ 42 में ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो वो दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया। इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया। 1942 में यह जन्म दिवस दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया। एंड ग्रैंडमा's candle was lit along with the rest, और दूसरी मोमबत्तियों के साथ along with the rest दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की बत्ती भी जलाई गई। Grandma's candle was lit along with the rest। तो 1942 में ये जन्म दिवस दूसरे की क्षतिपूर्ति के लिए एक नहीं मनाया गया था, ऑपरेशन के कारण, ग्रैंडमदर के ऑपरेशन के कारण, उसके आशय से मनाया गया। तथा दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1952 and the solemn indication of my diary. हम चारों का स्वास्थ्य भी अच्छा है। तथा इसके साथ में आज की तारीख 20 जून 1942 पर हम आते हैं तथा अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर and the solemn indication of my diary अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर and the solemn dedication of my diary अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर नेक्स्ट पेज Dearest Kitty,
वो 20 जून का लेटर यहाँ पे गिवन है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग indicates boots. हमारी पूरी कक्षा पूर्णतया क्वैक कर रही थी, कांप रही थी। The reason, of course, is the forthcoming meeting. आने वाली forthcoming meeting with the teachers decide who will move up to the next form, जिसमें टीचर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन छात्रों को प्रमोशन मिलेगा, आगे की क्लास में जाएंगे। फॉर्म इज क्लास, नेक्स्ट फॉर्म इज नेक्स्ट क्लास, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन डिटेन होगा, किसको रिपीट करना पड़ेगा, कौन फेल हो जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा जो है शर्त लगा रही है। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. हम अपने पीछे दो लड़कों सीएन तथा जैकेस पर मूर्खता से हंसते हैं। लाफ आवरसेल्व्स सिली, मूर्खता से हंसती है जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को, who have staked their entire holiday savings, छुट्टियों की पूरी बचत को, स्टेक करना में दांव पर लगाना, have staked this entire birthday savings, बर्थडे की पूरी सेविंग्स को दांव पर लगा दिया। दांव लगाने का जोखिम उठाया। From morning to 8 to night, प्रातः से लेकर रात तक, यही चलती है। From morning to night, यही चलती है। You are going to pass? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies. Dummies is मूर्ख। There are so many dummies, मूर्ख, that about कि लगभग quarter of class, 1/4 of the strength of the class should be kept back, should be detained. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. अध्यापक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जिनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। I am not so worried about my girlfriends and myself. I will make it, miss, I will succeed.
I will make it, meaning I will succeed. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, फिर भी, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. Not to lose heart. साहस न छोड़ो, हिम्मत न हारो, साहस न छोड़ो. Not to lose out. I get along pretty well. Pretty well means almost ALMOST. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths was annoyed with me for ages. Because I talked so much, after several warnings, chetavani, he assigned me extra homework, an essay of the subject, a chatter box, इस पर essay लिखने के लिए. फालतू की बातों नहीं, chatter box. A chatter box what can you write about that? I worry about that for later. I'll worry about that later. इसकी चिंता बाद में करेंगे. Worry में think, इसके बारे में बाद में सोचेंगे. I decided. I jotted down. Jotted down means wrote down. WROTE, wrote down the title, a chatter box, in my notebook. Tucked it in my bag, tucked me put, and tried to keep quiet. Quiet means mum, M-U-M. That evening, after I had finished the rest of my homework, घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के पश्चात के बाद, after I finished the rest of my homework, घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के बाद, the note about the essay caught my eye. मेरी निगाह पड़ गई जो नोट लिखा था essay के बारे में. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen की टिप को च्यू करते हुए, चबाते हुए, मुंह में डाले हुए. रैम्बल ऑन.
meaning given, and leave big spaces between the words. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and thought. मैं सोचती रही. I thought and thought. मैं सोचती रही. And suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keating had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait. Trait means गुण, विशेष गुण या विशेषता. And that I do my best to keep it under control. Next page. 53. Yes, 53. But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if no more. लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूर्णतः कभी छोड़ नहीं पाऊंगा. यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी. तथा विरासत में मिले इनहेरिटेड ट्रेट्स, विरासत में मिले गुणों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तो विरासत में मिला है. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लव एट माई आर्गुमेंट्स. मेरे तर्क पर मिस्टर कीसिंग को हंसी आई. When I proceeded to talk my way through the text next lesson, जब मैं आगे बढ़ी टॉक करने के लिए, to talk my way through the next lesson, so he assigned me a second lesson. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in. Handed means gave. And Keating had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he finally had enough. लेकिन तीसरे पाठ के दौरान हैड में काफ़ी कुछ हो चुका था. एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे entitled Quack, 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 said Mrs. Chatterbox. The class roared. कक्षा में शोर हुआ. I had to laugh too.
Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of starter boxes, it was time to come up with something else, something original. My friend Sonny, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keating was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan. Swan means Hans, with three baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keating took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keating's always making jokes these days. Mr. Keating आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं. इसका रीडिंग आप कल इसमें तो खुद नहीं पढ़ाएंगे. आप इसके बाद जो कुछ पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट में वो जुलाई में. रामू, 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 इसको दे, इसको नीरज के दे आओ. हाथ धोने की